Good morning to everyone. So how are you all? Fine. Good. आगे आ जाइए थोड़ा. Move forward. अच्छा. नींद भी नहीं आती. ग्रेट. आपने बात कही तो अच्छे लगे. अच्छा. आती तो है. ठीक है चलिए. So we are discussing historical background, नहीं? And under historical background we have specifically concentrated on the acts which were started after the revolt 1857, right? So हमने 1858 का एक्ट देखा, that is also known as a Good Governance Act, right? Then we have seen Chartered Act. Then we have 1909 Act, right? India Council Act, right? Not Chartered Act but India Council Act, and then 1909 Act, right? So next, what we are going to start under the Act is Government of India Act 1919. Okay. Now, first of all, before starting this Act, we should understand the background of this Act. Okay. So, as we have seen that after the revolt, right? If we bifurcate the British Act into two parts, that is a regulating act, that is companies, the country under the company's rule and the countries under the crown rule. If we talk about this, so crown rule में क्या था? What was in the company's rule? That decentralization was done, right? And unitary government was formed, right? But after 1857, the British tried to establish a decentralization government, okay? But not properly they have started, right? So 1909 was in the process to establish a decentralization government and representative government, nahin? That executives members, governor generals, executive members were also inducted through the Indians, though through representatives nominations but not through the elections, right? And governor of the provinces were also been allowed to have a non-official members, allowed किया गया था non-officials member को governor के council में भी, but nominations के through. It's clear? Now if you remember the era, that is of 1919, and 1919 is a period of not in the only Indian context but at the world context. It is an era of the World War, right? So 1919 का 1909 का जो एक्ट हमने देखा है, the act of the 1909, this act, though this act has tried to have an idea of representative government, but it does not establish a responsible government. ठीक है? Do you understand the meaning between these two, representative and responsible government? Right? What when we talk about, so if we say that 1909 Act, it has established a representative government. Representative government कैसे? It allows the governor general and governor in his council कि non officials member को आप induct कर सकते हो. It has allowed, it has expanded the council, right? So representative means the governor general and his council have two types of member. One is official members and one is non-officials member. Officials member कौन थे? Those who are appointed through the British government, they are known as an official government, officials member of the council. And non-officials, they is to be nominated through the governor, right? पहले non-officials member को governor on his discretion he is to appoint, but through 1909 there is a provisions
कि ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस, राइट। सो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को इंडक्ट किया जाएगा किसमें, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल काउंसिल में। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव, मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग द masses. So we can say that indirect elections is to be held, representation is there, but they are not responsible. What do you mean by the responsible? का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि वो लोग answerable नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने किसी भी एक्ट को लेकर के। Though they are representative, but they are responsible to the Secretary of State, and through Secretary of State they are responsible to British Parliament. Are you getting my point? समझ रहे हैं? तो वो रिप्रेजेंटेटिव तो थे, रिप्रेजेंट तो कर रहे थे अपने मासेस को, उनके थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ डेलिबरेशंस द गवर्नर यूज्ड टू नॉमिनेट सर्टेन मेंबर्स, कि हम आप कोई नाम सजेस्ट कीजिए, हम उस बेसिस पर इनको अपॉइंट करेंगे। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पब्लिक ऑफ देयर एक्ट। वो आंसरेबल किसको हो रहे थे? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल किसको रिस्पॉन्सिबल था? एसओएस को, एंड थ्रू एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल किसको दे रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। दिस इज अ अरेंजमेंट इन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। हमने अभी तक सुना जी, ये हम और 1909 को ही डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज अ शॉर्टकमिंग ऑफ 1909, लिमिटेशन ऑफ 1909 एक्ट। हमने 1909 को देखा, उसमें क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया गया थ्रू द इंडक्शंस ऑफ नॉमिनेशन मेंबर, और नॉमिनेशंस इसमें कैसे करना था? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस के बेसिस पे नॉमिनेट कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि 1909 एक्ट को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। It does not come directly or wholly under the control of the British. Certain members of the council, Governor General and his council, and to the Governor and his council, ठीक है। ये गवर्नर और उसके काउंसिल किसको काम कर रहे थे? फॉर द प्रोविंसेस, राइट, प्रोविंसेस, एंड गवर्नर जनरल इज काउंसिल फॉर द होल ऑफ द इंडिया, सभी के लिए काम कर रहे थे। इनमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अगेन इट हैज आल्सो सिमिलरली टू द अरेंजमेंट ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल का अरेंजमेंट काउंसिल में था, मींस ऑफिशियल्स मेंबर भी थे और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी दोनों थे। आर गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो यहां भी ऑफिशियल्स मेंबर थे और यहां नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। नाउ दीज नॉन ऑफिशियल्स मेंबर वो कैसे नॉमिनेट कर रहे थे? विद द रिकमेंडेशंस बाय द प्रोविंसेस में, थ्रू द म्युनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू वो नॉमिनेट कर रहा था गवर्नर। यस और नो? वी हैव डन दिस। Are you getting my point? It means it shows that 1909 has tried to present the representative form, but not a representative form, but not a responsible government. Responsibility उनकी establish नहीं कर रही थी, accountable नहीं थे वो पब्लिक को, इंडियन सिटीजन्स को और इंडियन सब्जेक्ट को। वो रिस्पॉन्सिबल किसको थे? अपने किसी भी एक्ट के लिए वो जवाबदेही किसके थे? गवर्नर किसको रिस्पॉन्सिबल था? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, वॉइसरॉय हम जिसे कहते हैं, ठीक है। और वॉइसरॉय कौन किसको रिस्पॉन्सिबल था? स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1909 का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही रहा कि दो उन्होंने द एक्ट, though it tried to establish a representative government, but it does not establish a responsible government. And due to this reason, the Indian nationalist leaders were not satisfied. अगर आप इस समय का पीरियड देखिए 1909 का पीरियड, तो 1905 में क्या, 1905 में क्या था? बंगाल डिवीजन, बंगाल का पार्टीशन हुआ। अब कांग्रेस भी दो हिस्सों में बटी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट चले गए, ठीक है। मॉडरेट अभी भी क्या ट्राई कर रहे थे? लिटिगेशंस के थ्रू अपने पॉइंट्स को ब्रिटिश के सामने रखने की, पेपर एंड लिटिगेशंस। और एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल,
were known as extremist. एक्सट्रीमिस्ट क्या ट्राई कर रहे थे? एजिटेशंस, वायलेंस नहीं, एजिटेशंस के थ्रू, बॉयकॉट के थ्रू, स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू, तभी यहां पर नारा दिया गया ना बॉयकॉट का, स्वदेशी अपनाओ. So these Congress in the two parts, and by this act the Congress, Indian national leaders were not satisfied with this act, because though it is representing, provided a representations कि आपका inductions है गवर्नमेंट में, आप किसी को कीजिए, we will introduce them, but we are not responsible. So this is a major shortcoming. Are you getting my point? Yes or no? And second, after this, the 1919 Government of India Act 1919 is also known as a Montague-Chelmsford reform. ठीक है, this is known as a Montague-Chelmsford reform, and 1909 it was known as a Morley-Minto reform, right? So similarly, Montague was a Secretary of State. ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, जिसको क्राउन अपॉइंट करता था, और वो रिस्पॉन्सिबल किसको था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, राइट? सो ऑल द ड्यूअल गवर्नमेंट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाय द 1773 एंड बाय 1784 कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, दोनों को मर्ज करने के बाद एसओएस का फॉर्म किया थ्रू द 1858 एक्ट. ये हमने देखा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दोनों ही को दे दिया उसके अंदर में ऑल द पावर, right? And SOS is responsible to the British Parliament. यानी ब्रिटेन में बैठ करके वो यहां के लिए लॉ बना रहा था, एंड SOS थ्रू गवर्नर जनरल, थ्रू वॉइस रॉय कंट्रोल कर रहा था किसको? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को. यस या नो? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक दिस. Governor General responsible to SOS, and SOS responsible to British Parliament. और accountability, और आप कह सकते हैं control is through, like this is the channel of control. This is arrangement what we have understood. ठीक है, तो 1919 का पीरियड, इंडियन नेशनल लीडर्स जो डिससेटिस्फाइड थे विद द 1909, बिकॉज मेजर कंसर्न्स की प्रॉमिस तो किया गया, बट दे आर नॉट बीन गिवन रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ. देन दिस एक्ट मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कम अप विद द अमेंडमेंट्स. Amending those provisions which were in 1909, but it has established a new setup for the government in India. And through this representation, through this act, the act tried to establish responsible government and a representative government. आपको याद हो 1909 is also known as a 1909 एक्ट ऑफ 1909, 1909 एक्ट को एक और किस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है? ये पार्टीशन 1905 में हुआ था. कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए बहुत फेमस था, राइट? यस, कॉम्युनल, मुस्लिम्स को दिया गया कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस. का क्या मतलब हो गया कि in the Muslim majority region only Muslim can contest and only Muslim are eligible to vote, no other are eligible to vote. This is known as a communal representations. तो communal representations का मतलब हो गया कि जिस मेजोरिटी में मुस्लिम ज्यादा हैं वहां सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा, और प्लस वोट सभी को नहीं है, वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे. So this was an opposed by the Indian National Congress, right? To amend that provisions, they come up with the 1919. तो इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी ट्राई किया, और क्या कोशिश की गई? रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ, टू स्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू स्टैब्लिश द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन 1919. To amend the defect in the 1909 Act, which was opposed by the Indian National. क्यों? Because the
British wants a support from the Indian in the war. वर्ल्ड वॉर का पीरियड है ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यस और नो? 1919 was the period of first world war. The British engaged in first world war. ठीक है, so they try to get an support. So because of that they have tried to pacify the national movement. और इस दौरान मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का डिवाइड भी हो गया था, एंड दे आर extremists are more aggressive in presenting their demand, right? So they have also started for the Swaraj, self independence की बात करने शुरू कर दी थी उन्होंने. This is the period, ठीक है. Now this is the background for the article 1919, Government of India Act 1919, Chelmsford, Montague Chelmsford reform. Any doubt यहां तक background में? Background is clear, ठीक है. आपने तो कहा यहाँ नींद नहीं आती वहां बैठने से, और क्लास के पहली टाइम से शुरू कर सोना आप. क्लियर? सो नाउ वी विल सी द प्रोविजंस ऑफ द 1919. प्रोविजंस ऑफ द 1919 मैंने 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा है, विच इज बिन गिवन. सो फर्स्ट was change diarchy in the provinces. Second, relaxations of central control over provinces. And third, the Indian legislature made more representative. So these on the background, on the topic, or you can say that subheading, the changes were made through the 1919. Okay, so we'll discuss each one of this subtopic, and then we will also, I will dictate you to write down this, because आपके पास, as I have already said, कि act या article मैं आपको dictate नहीं करूंगा, that is unnecessary wasting of time. आपके पास एक्ट होगा, मिल जाएगा आपको एक्ट, राइट? कहीं ना बुक्स में भी है और इसमें भी है. उससे जो इन्फरेंस, जो हमने व्हाट वी विल इन्फर फ्रॉम दैट एक्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू राइट इन अ मेंस एग्जाम, दैट आई विल गिव यू इन द राइटिंग. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए. सो नाउ वी विल स्टार्ट अ डायरकी इन द प्रोविंस, राइट? नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डायरकी? डायरकी का क्या मतलब है? ड्वेल गवर्नमेंट. डायरकी मीन्स ड्वेल गवर्नमेंट, ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट द ड्वेल गवर्नमेंट, that is dual government. Now dual government here means the subject is been divided into 2 part. One is central subject and one is provincial. सब्जेक्ट तो 2 हिस्सों में कर दिया गया. एक सब्जेक्ट किसके लिए रखा गया? सेंट्रल कंट्रोल में गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, एंड सेकंड इज फॉर द प्रोविंशियल, फॉर द गवर्नर एंड हिज काउंसिल. Are you getting my point? Now again there is an bifurcations. अब यहां पर क्या है? Dual government. Now there is again a bifurcations of a provincial subject. तो provincial subject को again 2 हिस्सों में बांटा गया. One is known as a transfer subject and one is known as a reserve subject. तो इसको एक रखा गया reserve subject and one is transfer subject. Clear? Now up यहाँ पर, as we know that this provinces have a government, representative and responsible government, and that is governor and his executive council, जिसमें officials और non officials दोनों member थे, right? तो अब यहाँ पर उनके act how to administer this provincial subject was been given in the 1919. तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था, दिस रिजर्व सब्जेक्ट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट इज ऑफिशियल मेंबर. ये 200 में था, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स. तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसको एडमिनिस्टर कैसे करना गवर्नर को? थ्रू द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज ऑफिशियल्स मेंबर, दो दे these governor general executive council are not responsible to legislative.
तो रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मेकिंग रूल्स, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशंस, राइट, टू इम्प्लीमेंट लॉज विच कम्स अंडर द रिजर्व सब्जेक्ट्स, उसको गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें ऑफिशियल्स मेंबर थे उनके थ्रू वो रूल बनाता था, इम्प्लीमेंट कर रहा था, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. This is how a reserve subject was to be administered. A provisions in 1919 was given. Is this clear? Any doubt? किसी को भी? ठीक है, राइट. तो रिजर्व, जो रिजर्व है फॉर द गवर्नर, एंड द गवर्नर इज टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. दोज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ब्रिटेन नहीं, प्रोविंस इंडिया बनाया गया है इस समय, इलेक्शंस का प्रोविजंस आया, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट. तो ट्रांसफर सब्जेक्ट वाज टू एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with his ministers who are responsible to legislature. Now are you getting my point? तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को पहले डायरेक्टली लाई गई प्रोविंसेस में, सेंटर सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट को अलग रखा गया. इज इट क्लियर? अब फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फिर दो सब डिवाइड किया गया इनटू अंडर द टू डायमेंशंस. वन इज रिजर्व. रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर गवर्नर कर रहा था अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. रिस्पॉन्सिबल मींस दे आर नॉट आंसरेबल फॉर देयर एक्ट और फॉर देयर एडवाइस व्हाट दे आर टेंडरिंग टू द गवर्नर. मींस यहां पर कंट्रोल था. यस और नो? आई गेटिंग माई पॉइंट? एंड द अनदर सब्जेक्ट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो ट्रांसफर कर दिया गया टू द गवर्नर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. Are you getting my point? So through this can we say that it established or the provincial has an autonomy in the subject? Autonomy मतलब समझते हैं ना, full power to decide. sovereignty, provincial को sovereignty थी नहीं. वो आएंगे, पूरे सब्जेक्ट को करने की जरूरत नहीं है. Here we need to understand one or two things. ठीक है, वो मैं बताऊंगा डिफेक्ट में, इसका क्या डिफेक्ट है. बट यहां हियर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दिस कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये दो सब्जेक्ट बनाया गया, इट मींस द प्रोविंसेस वर गिवन द ऑटोनॉमी, सोवरेनिटी, ठीक है आप करो जो आप कर सकते हो. नो, द रीजन इज दैट दिस दो दे हैव अ बाइफर्केशन ऑफ सब्जेक्ट तो कर दिया उन्होंने कि रिजर्व और ट्रांसफर कर दिया, बट दिस इज नॉट एन डिवीजन ऑफ पावर. This part, provincial or the governor, the power has been deliberated through the center. Deliberation of power था ये. और deliberation of power का क्या मतलब हो गया कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट पावर नहीं दे रही थी. वो कौन दे रहा था? गवर्नर जनरल. वॉइसरॉय कह रहा था आप ये काम करो. Are you getting my point? यस और नो? राइट. अब यहां पर ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सेंटर में होगा और कौन सा सब्जेक्ट प्रोविंसेस में होगा? क्योंकि सब्जेक्ट में तो डिवीजन हो गया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट बनाए गए. नाउ हु इज गोइंग टू डिसाइड? दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द गवर्नर जनरल, नॉट बाय एनी कोर्ट. तो क्या हम कह सकते हैं फेडरल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट था? नहीं. अरेंजमेंट दो इन पेपर, दो इट्स सीम्स लाइक दैट एक फेडरेशन की कोशिश की गई 1919 के थ्रू, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई, लेकिन फुल्ली ऑटोनॉमी नहीं था. बिकॉज फर्स्ट दे आर बीन डिराइविंग देयर पावर नॉट फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशंस, रादर द पावर विच इज बीन गिवन टू द प्रोविंसेस आर डेलिब्रेटेड फ्रॉम द गवर्नर जनरल. डेलिब्रेटिव पावर था, गवर्नर जनरल उनको देगा तभी वो काम करेंगे.
राइट, एज वी हैव आल्सो सीन बिफोर दिस एक्ट कि प्रोविंसेस को एक दिस फिनेंसेस के ऊपर, बजट के ऊपर बहस करने का मौका मिला, अपने बजट को पेश करके उस पर बहस करने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का मौका मिला, यस और नो? नाउ थ्रू दिस एक्ट, 1919 एक्ट के थ्रू क्या हुआ, द लेजिस्लेचर इज बीन डिवाइडेड, सेंटर प्रोविंस, ये अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। दो लेजिस्लेचर इज बीन पुट अंडर द टू हेडिंग, रिजर्व लेजिस्लेचर समझते हैं ना, बिल बनाना किसी भी मैटर पे, तो पावर तो डिवाइड कर दिया गया लेजिस्लेचर में, लेकिन वो पावर डेलिब्रेटिव पावर था, जब तक जो गवर्नर कहेगा वही डेलिब्रेट किया जाएगा। सेकंड, फिनेंसेस इज आल्सो बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रोविंसेस को क्या कहा गया कि नाउ यू कैन प्रेजेंट योर ओन बजट, यू कैन पास योर ओन बजट, बिकॉज टू फंक्शंस एनी गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ फिनेंसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी इंडिविजुअल्स को फंक्शन करने के लिए पैसे तो चाहिए, यस या नो? तो वो फिनेंसेस इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि नाउ इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, कि चलो आप इस पे आप फाइनेंसेस कर सकते हो, अपने बजट को खुद पेश करो, आप टैक्सेस लेवी करो। बट हियर कैच इज, अब यहां ट्विस्ट क्या था कि ये फाइनेंसेस को कहां रखा गया, रिजर्व सब्जेक्ट में, ना ही कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में। तो अगेन कंट्रोल किसका आ गया उसके ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स का, सिविल सर्वेंट्स का, गवर्नर का, गवर्नर जनरल का, ना ही कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? इज दिस क्लियर? तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ डायरकी थ्रू द 1919। ड्यूअल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट को अलग करना, स्टेट सब्जेक्ट को अगेन सब डिवाइड करना टू हेडिंग्स में, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट को हैंडल कौन कर रहा था, गवर्नर विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हु आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। नाउ दिस एक्ट आल्सो ट्राइड टू गिव अ पावर टू प्रोविंसेस on its own legislative matter, for its own administrative matter, for its own financial matter। बजट आप पेश करो अपने लिए, आपको अलाउ है, यू आर अलाउड टू लेवी द टैक्सेस, बट दैट कम्स अंडर द हेडिंग अंडर रिजर्व सब्जेक्ट, कि उस पर लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है फाइनेंसेस में। इट मींस फाइनेंसेस इज स्टिल बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, गवर्नर जनरल। I getting my point? और यहां पर still the provision is that the governor general, there are certain bill which should not be inducted into the legislative provinces without the previous consent of governor general. So all these provisions says कि ये जो power दिया गया था this through the arrangement of diarchy, it let us to understand that this does not give an sovereignty autonomy to the legislature, rather provincial legislature, rather it is a deliberative, or it's a deliberative of power which has been deliberated by the center, that is governor general, viceroy हम जैसे कहते हैं, viceroy and council। any doubt till here, any doubt, anyone? समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट डायरकी इन प्रोविंसेस। यस, so diarchy in province is the first thing which has been introduced by the 1919. So you do not have pen and paper, or you're not in a mood to write down? It is dual government. Diarchy means dual government.
The subject of the administrations were to be divided in two categories. Diarchy means dual government. Dual government. Next point. The subject of administrations. The subject of administrations were to be divided in two categories. Were to be divided in two categories. First, central subject. Are those central subject? Are those which were exclusively kept under? Are those which were exclusively kept under the control of central government? Which were exclusively kept under the control of central government. It's clear? And those all, I mean, the central subject are those which has been of a national importance, like defense, communications, railways. ये जितने थे ये सब सेंट्रल इंपॉर्टेंस के थे, तो दे आर केप्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल सब्जेक्ट. ठीक है. सेकंड इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट. प्रोविंसेस तो समझ रहे हैं, द करेंट स्टेट व्हाट वी नो. ठीक है. प्रोविंशियल सब्जेक्ट, these subjects were again subdivided into these subjects were again subdivided into first transferred subject, which were to be administered by the governor. Which were to be administered by the governor with the aid of ministers who were responsible to legislative council. ठीक है. aid of ministers who were responsible to legislative council. ठीक है. but one thing what you need to do here is कि आप इसको जब भी पढ़ें but go along with the act. वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, नॉट इन द मेंस बट प्रीलिम्स इट विल हेल्प के क्या क्या प्रोविजंस थे. सो एक्ट को अपने पास जरूर रखिएगा ऑफ 1919. ठीक है. द सेकंड इज रिजर्व सब्जेक्ट. These were to be administered. Reserve subjects were to be administered by the governor and his executive council. By governor and his executive council without any responsibility to legislature. Without any responsibility to legislature. ठीक है. Means the act whatever that they have been done under this category of the reserve subjects, they cannot held responsible by the legislature.
कि आपने ये क्यों किया या otherwise anything. It's clear? So this is the first what we have understand is that diarchy in the provinces under Article 1919. ऐसा कोई फिक्स आई मीन द लोकल इंपॉर्टेंस रिजर्व सब्जेक्ट में फिनेंसेस आ गया था, हाँ वो फिनेंसेस, और आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट में हेल्थ एजुकेशन ये सब था जो लोकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट इज नॉट बिन आस्क्ड, ठीक है, इतना डिटेलिंग की जरूरत है नहीं। क्लियर? एनी डाउट, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोविजंस इज दैट रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। Now what do we mean by the relaxation of central control over provinces? Now here we need to understand कि पहले क्या था, provinces के लिए भी center ही law बना रही थी। As we know that through this act of 1919, the subject was divided between center and provinces. दिस इज सेंटर सब्जेक्ट, जहां पर बनाएगा लॉ कौन बना रहा था, गवर्नर, वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल, एंड देयर विल बी अ सब्जेक्ट टू द प्रोविंशियल्स। तो दिस सेंट्रल सब्जेक्ट इज ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंट, लाइक डिफेंस, finances of the center, communications, relations with the other nations, these were kept under the सेंट्रल सब्जेक्ट में रखा गया इसको। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आर ऑफ द रीजनल इंपॉर्टेंस। Are you getting my point? Now, earlier through this arrangement of 1919 क्या था कि that center was allowed to make laws for the provinces also. सेंटर ही लॉ बना रहा था प्रोविंसेस के लिए। थ्रू दिस द प्रोविंसेस वर गिवन एन ऑटोनॉमी, यू कैन आल्सो मेक लॉज। सो इट मींस दैट इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू दिस पावर over the control, and it says that the central government is empowered to legislate and administrations related to legislations all over the country, territory of India. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, वाइसरॉयज का पावर क्या था, टू एडमिनिस्टर्ड एंड टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट मैटर अंडर द सेंट्रल सब्जेक्ट, प्लस टेरिटोरियल, इफ बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द टेरिटरी, सो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस इटसेल्फ। यस और नो? सिमिलरली टू द करंट सिचुएशंस कि पार्लियामेंट लॉ किसके लिए बना सकता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा दैट कैन बी मेड फॉर द होल पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? एंड प्रोविंसेस वर अलाउड टू मेक लॉज फॉर द टेरिटरी ऑफ state, provinces, and only subject matter related to the provincial subject. So does this mean that a federal system was established? No. Still there is a control of Governor General or a center over here, because it's not an autonomy given to them, rather it is an deliberation of power, a deliberate power. पावर कौन दे रहा था? गवर्नर, आप कीजिए। फिनेंसेस, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, दो इट हैज बीन सेपरेटेड थ्रू 1919, but still the power is given to the center, deliberations power, that will become through center, not through the any constitutions, or you are not autonomy. So though at the first instance we can get an idea कि article 1919 tried to establish a federal system, and federal system means where both the unit, the participant of a federations were independent in their nature
were independent in forming, administrating, independent in legislating. कोई भी बिल बनाने में इंडिपेंडेंट है, किसी भी बिल को एडमिनिस्ट्रेट करने में इंडिपेंडेंट है. ये हमें एक आइडिया मिल सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज द कंट्रोल, इट हैज रिलैक्स द कंट्रोल. आप अगर देखें तो इट ओनली रिलैक्स, दिस इज गिवन रिलैक्सेशंस, नॉट कंप्लीट रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर द प्रोविंसेस. सो कंट्रोल तो था, लेकिन रिलैक्सेशन था कंट्रोल में. कैसे कैसे कंट्रोल बना के रखा उन्होंने. अगेन नाउ हियर वी हैव सीन कि दिस प्रोविंसेस वर गिवन द पावर टू लेजिस्लेट एंड टू एडमिनिस्टर, बट इट कम्स विद द ट्रिक इज दैट कि एनी लेजिस्लेटिव बिल will not become an act even after the governor of the provinces has assented it without the assent of governor general. किसी भी प्रोविंसेस ने एक लॉ बनाई अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोसेस क्या होता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, उस लॉ को गवर्नर के पास भेजेगी, गवर्नर उसे एसेंट करेगा, देन दिस विल बिकम एन एक्ट. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. But through 1919 it was said कि though this is a process, but that bill, even the governor assented that bill which has been passed by the provincial assembly, legislative council, it will not become an act without the assent of the governor general. So here we can see there is a control of a governor general over the provinces. है या नहीं, राइट. सेकेंड, इट इज बिन एम्पावर्ड द गवर्नर, गवर्नर को एक पावर और दिया गया कि दैट इट कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर जनरल. एंड देन गवर्नर जनरल हैज ऑल्सो बिन एम्पावर्ड दैट इट कैन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ क्राउन. तो ऑटोनॉमी तो है ही नहीं प्रोविंसेस के पास, कि वो अगर कोई बिल बना भी दे तो उसे गवर्नर जनरल रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज दैट कैन नॉट बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल. वॉइस रॉय, गवर्नर एसेंट करने के बाद भी वो एक्ट नहीं बन सकता है. सो देयर इज अ कंट्रोल, दो दे हैव बीन गिवन अ फ्रीडम टू इंट्रोड्यूस देयर ओन बजट रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, बट अगेन इट कम्स अंडर द गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल. It means the responsible ministers were not been allowed to introduce a budget or make any changes in the budget. Are you getting my point? Then a previous sanction of governor is required for the certain number of bills. Governor जनरल वाइसरॉय, उसके बिना बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती लेजिस्लेचर में. तो यहां पर here what we can see is that relaxation has been provided, not a complete abrogation of control of government center over the provinces, but there is a relaxations. और relaxations किस terms में? To introduce the bill, but that bill only become an act after governor general can assent, viceroy is assenting the bill. So if the questions arises, does the article 1919 Government of India Act 1919 is try to establish a federations, a federal government, a federation? So no. The reason, there is no autonomy, no sovereignty, there is a control of governor for the bill. So in the provinces a control of governor was higher. Are you getting my point? Yes or no? Right? So this is the second point of relaxation of central control over provinces. Any doubt? Write down. Relaxation of central control over provinces. The Government of India Act 1919 made a separation of subject of administrations. The Government of India Act 1919 made a separation of
subject of administrations into two category. The first is central. Subjects of all India importance were brought under the central control. Subject of all India importance were brought under the central control. Second is provincial. Second is provincial. Matters primarily relating to the administration of provinces. Matters primarily relating to the administration of provinces were under the provincial control. Matters primarily relating to administrations of provinces were under provincial control. Right? So this is the two separations were made by Government of India Act 1919 in the terms of administrations. Okay? We have seen in the terms of legislations under the hierarchy. Now here we are seeing the relaxation in the terms of administrations. Right? Now write down the next point, which means that a relaxations of previous central control, which means that a relaxation of the previous central control over provinces which means अभी जो आपने दो चीजें लिखी है ना, सेंट्रल और प्रोविंसेस, what now you are writing with the inference of that कि उससे हम क्या समझ रहे हैं. तो which means that a relaxations of the previous central control over provinces not only in administrative but also in legislative and financial matter. But not only in administrative but also in legislative and financial matter. ठीक है? Is this clear? Next point. The provincial budget was separated. The provincial budget was separated from the government of India and the provincial legislature was empowered to present its own budget. Empowered to present its own budget and levy its own taxes. LEVY. Do you understand the meaning of levy? Impose, वो लगाना, उसको खुद वो taxes लगा सकता है. तो that is levy of its own taxes relating to the provincial source of revenue. Relating to the provincial source of revenue. कोई issue? You seem not interested. Okay. It seems relating to provincial source of revenue.
Clear? So this is what the arrangement was made by the article 19 and 19. ठीक है. Now next point, but the devolution of power to the provinces. Now we are writing the shortcomings of this relaxation of central government. But the devolution of power समझते हैं ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, given to the another also, right? But the devolution of power to the provinces is not a federal distribution of power. The devolution of power to the provinces is not a federal distribution of powers. Now we are going to write down the reason why it is not a federal distribution of power. First, so आप वहां पर हाइफन दे दीजिए, हाइफन. First, the provinces got power by way of delegation from center. ठीक है. तो ये क्या शो कर रहा था यहां पर? What does it trying to show or give an idea? What does this mean? It is a unitary form of government. Still the British is forming or following a unitary form of government in India. Representative government तो बनाया उन्होंने, but still under the unitary form. Deliberation अभी भी, main control अभी भी सेंटर के पास ही है. तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर जरूर था. There is a two different thing, devolution of power and federal distribution of power. Devolution of power means giving power to the another person also for making laws and taking decisions. And federal system, it means giving an autonomy कि हमारा control नहीं है, now you are sovereign, autonomous, free to make rules and regulations. But that is not an provisions in 1919. It is a deliberation of power. It means still the British government is following an unitary form of government. इस समय ये interference, अगर क्वेश्चन हो कि that article 1919 has established a federal government, no, still it is having an unitary government. So we are writing a reason how it shows that British government is an unitary government. So first, it is deliberating the power. तो प्रोविंसेस कहीं और से किसी कॉन्स्टिट्यूशन या 1919 के एक्ट से पावर जनरेट नहीं कर रहे थे. दैट इज गिविंग द वॉइस रॉय डेलीगेशंस. सेकंड पॉइंट, द सेंट्रल लेजिस्लेशन retain the power to legislate. The central legislation retain the power to legislate for whole of India. ये what you have written ना, it says कि पूरे whole of India के लिए the power has been given to the center. यानी provincial legislative bill जो भी bill होगी, that will be is not going to override the bill which is or law which is made by the center. So overriding power again have a center. सेंटर ने कोई लॉ बना दी किसी भी मैटर में और उस पे अगर प्रोविंसेस लॉ बनाए तो दैट विल नॉट गोइंग टू बी रिटेन. Overriding power is given to center. So it also give a control to the governor general. सेम मैटर में दोनों ने लॉ बनाया, वॉइसरॉय की लॉ प्रिवेल कर जाएगी, तो वो उसका सब्जेक्ट मैटर है फिर भी.
It also means if Governor General has a power to legislate on provincial subject. पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए अगर वो बना रहा है टेरिटरीज के लिए, तो इट्स गिव द पावर कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी वो उसमें लॉ बना सकता है. सो अगेन देयर इज अ कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल, वाइसरॉय over the provinces. Are you getting my point? Next point. Is it clear? Next point. The control of Governor General over provincial legislation Governor General over provincial legislation was also retained by a laying down. The control of Governor General over provincial legislation was also retained by a laying down